हम यमजुम मोबा आप है। आपने जब आरटीआई फाइल किया, एक प्रोजेक्ट के लिए फाइल किया। ये एमआईपी आरी स्कीम है सिलोनी रिवर। तो वो स्कीम कब से कब था, आपको कुछ आइडिया है? सर वो जो ऐसे तो वो लोग 2016 को वो लोग ये को दिव्या एस्टिमेट बनाया और सुनने में आया है, लेकिन वो मेरा पास कुछ रिटेन परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन फंड जो 2021 को फंड हुआ है और वो लोग वो जगह पे काम किया है करके सुनने में हमको आया है। तो इसलिए इसको हम जानने के लिए जब ये डिपार्टमेंट को हमने अ, जो फॉर्म ए को भर के दिया तो उनसे कुछ हमको खबर नहीं थी। जी। उसके बाद इसके बाद सर हम लोग को 30 डेज के बाद रोका, तो उसमें भी वो लोग का तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जवाब नहीं मिला। तो इसके बाद सर हमारे पास अपने टीम में गया, तो वो भी सर टाइम उसमें भी चला गया। इसके बाद सर हम आपका यहाँ फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कहाँ पे है, आपको मालूम है ना? ये में थापुरी जो में सर एसी सुपरिटेंडेंट ऑफ एसी। हाँ, तो उसमें आपने अपील किया? जी सर। अपील का पर्पस याद नहीं है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी का कोई भी नहीं है। सर 23/1/2024 को हम वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में जब आपने अपील किया, तो उन्होंने आपको कुछ नोटिस, हियरिंग का कुछ नोटिस भेजा आज तक? सब कुछ नहीं। तो हमने उनको 23/1/24 में भेजाया, तो वो लोग रिसीव 8/2/24 में, लेकिन सब कुछ भी हमको ये नहीं उनसे नहीं मिला। आपका रिकॉर्ड में उन लोगों ने रिसीव कब किया? 8 सर 8/2/24। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी ना? जी सर। तो उस समय से लेके आज तक कोई आपको नोटिस ऐसा नहीं दिया? और आपको ये कैसे मालूम हुआ कि फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी ने 8 फरवरी को आपका अपील को रिसीव किया करके? वो हमने एग्जाम हिस्ट्री पोस्ट कर दिया था, जी तो ट्रैकिंग ये से जी जी। तो आप इन पर्सन जाके कभी एसपी ऑफिस में इंक्वायरी किया? सर ऐसा तो अभी थापुड़ी जो में आपके सामने नहीं है। जी। तो पोस्ट ऑफिस का जो ट्रैकिंग का फ्यूचर्स है, उसका हेल्प का द्वारा आपको मालूम हो गया कि 8 तारीख को मिला है। जी सर। ठीक है। तो उसमें आपको, आपका क्या कहना है कि इन्होंने फॉर्म ए को आपके पास में फाइल किया, यस यू आर द पीआईओ, and then he didn't get any information from you, so he had to go to the first appellate authority
who is the superintending engineer as per the RTI Act, but there has been a simple memo from government of Arunachal Pradesh stating that the chief engineer will be the first appellate authority. Yes, concerned chief engineer. लेकिन इसमें मेरा अपना ये कमीशन का मानना है as the RTI Act is a legislation passed by the Parliament of India, the government of India. I don't think the state can make amendments to it without the consent of the Parliament of India. One thing, because the Act gives to us that the immediate authority who is higher than the PIO is the deemed first appellate authority. Whatever be, in some cases we send orders from this court to the SE, and in some cases we send it to the chief engineer as per the report that is provided to us by the PIO here in this court. Now, can you tell us why you denied him the information as he has sought? Reasons maybe. Absolutely so. So let me start with the history of the case. Yes. So this particular this particular RTI, this was submitted to the concerned PIO on 13 June 2023. And let me tell you, sir, this PI was this RTI was submitted as a combined RTI, not by himself alone. There is one more member who has jointly submitted the RTI. Okay. Yes. Sir, after receiving the RTI, we go through the documents shown in the RTI, and then likewise the according to the address they have provided, we have replied the RTI to the address, and we have issued a single reply stating that since both have combined filed the RTI, whoever shall receive, they will see and discuss it. The one who have received the RTI is Mr. Vijay Taram, and I have this receiving copy here. And Vijay Taram has through phone call come to confirm me that he has received and he has gone through the documents provided by us, and he is fully satisfied with it. After, I think, after 3 or 4 months, he comes to our office saying कि Vijay Taram never saw the information that was provided by us, and he is saying कि that reply should be provided to him personally also. That I don't know what what the X say, that I do not know, but as far as I know, if the application was filed combinedly, it can be the reply can be given to anyone. Yes. That's what I believe. So the reply was thoroughly replied, and if anything else is there, we're ready to do it. Like giving the information now also, we have given the information, and it is with us in hand. So that is all I can say about it. So, but here in his annexure, here in his application that he has given to us, yes. Only in his name. Sir, that is because he is saying the first combined application which they filed, which we replied, that is with me. He has copied the same application, okay, and removed the other applicant's name and filed it again, for which we didn't reply. Then the second application filed by him. The first application is with me, sir. So this is for you to see. Okay. Yes. Let us see that. Yeah, it is on sir 23. This is 13. Yes, yes. That is filed by the same application, same content, everything is dito, except he has removed the co-applicant's name. That is it, sir. आपको इसमें क्या कहना है? आपने और एक और आदमी ने यही एप्लीकेशन को इसी पीआईओ के पास में फाइल किया, आप वो मानता है? सर, ये जो इसको हम लोग जो एग्रीगेट जी, और हम लोगों ने फर्स्ट में हम लोग 4 मंथ पे को जी, उस समय हमने सबमिट किया जी, सबमिट करने के बाद फिर उन्होंने हमको बोला
कि ये जय साहब जो उसका भैया जय साहब को बात किया, बात करने के बाद में वो बोला है कि मेरा भैया से हमको प्रेशर आता है, तो मैं तो अभी इसको नहीं कर सकता। तो ऐसे उन्होंने बोला कि सच क्या है हमको मालूम नहीं। तो सर हम तो सिलोनी बस्ती का एक यूथ जी सर, इसमें सर इसलिए हम दो तो केस सर आज मेरा आपका यहाँ है और एनसीएनडी का है सर, ये सेम जगह में सेम थियोटिक है, तो इसलिए हम तो इसको अब एनजीएनडी का 12 लेक्स भी पैसा गायब है, बस्ती वाला 3 इयर्स हो गया नहीं मिलता है, तो उसका अंदर में ये काम जो हुआ है, इसलिए सर अभी हम दो दो केस का यहाँ में ना बनाए। तो हमने तो इसको तो सर मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा बस्ती के लिए तो हमको तो लड़ना है। हाँ, इसलिए सर हम तब तो होगा दो एप्लीकेशन। आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं आपके लगाता सर, हमने फिर थ्री है सर, सिंगल है सर, इलेक्टर ये वन का ये 19 में सर आप सिंगल है उसमें जरूर आपने दिया था दो आदमी, लेकिन उसको हम सपोज करके हम छोड़ देंगे, हम प्रेस में आके आए। In his statement, he is right because the act itself is for providing information to the citizens of India. In my court, in previous cases, I have disposed of cases wherein the appellants write president, anti-corruption organization, secretary, this and that. I have advised them, I have made them known that the act is for the citizens of India, not for any organization. You cannot write anti-corruption president, this corruption, that RTI president. The act doesn't provide them relief. So I have asked the appellants and the applicants to write their names simply because no one has made them the president of anti-corruption association or whatever association. It is just a self-styled organization. Two people, three people, they sit in a hotel room or in a room, they make an organization. So I have discouraged such things. Why I am telling it is that this appellant had applied the application with another co-applicant and that he is also agreeing, admitting. But again, he is submitting that due to certain reasons, the other co-applicant opted out from the party as an applicant. So he had to file a fresh application. In that way, in doing so, he has his rights. आपका full right बनता है आप एक नया fresh application फाइल कर दें। तो उसमें अभी ये पीआईओ बोल रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन इनके पास है अभी भी। So you have the information you are saying now with you. Do you have it now here also? You can provide him here. So इसमें दो चीज हम जजमेंट दे सकते हैं आज। एक है वो जो एसई एसई को एसई का मैंडेटरी ड्यूटी होता है। आप जब अपील करता है आपको एक नोटिस देके एक हियरिंग करना आपको और पीआईओ के साथ में। एसपी मीन्स द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। He has to conduct a fair hearing between you both. एक बार में आप नहीं आ सका या पीआईओ नहीं आ सका तो दो बार होना पड़ेगा। दो बार में भी अगर आप या कोई नहीं आ सका तो अभी तीसरा बार होना पड़ेगा। The prime intention of any law is that the parties should be adequately given a fair chance to be heard. Not like you didn't turn up in the first hearing or you didn't turn up in the second notice. The court abruptly gives out a judgment. Our main uh, motive is to see that both the parties get at least a fair chance of hearing at least once. So इसमें हम ये भी अभी आज डायरेक्ट कर सकता है issuing an order to the SE to give a fair hearing to you along with the PIO within 30 days from my order. That he has to do. That is mandatory for him. अभी तक कोई कोई पहले वाला कमिश्नर्स लोग ने ऐसा नहीं किया करके हम लोग अभी रिमांड बैक कर रहे हैं। उसी केसेस को रिमांड बैक अभी जो जैसे इस आरटीआई में प्रोसीज्योर है उसको हम लोग फॉलो करके क्यों फॉलो कर रहा है बोलने से
अभी का कमीशन मेंबर में हम लोग दो आदमी है जो 20-30 साल से कोर्ट में ही अपना जीवन गुजारा है, ऐसा नहीं बोलते। तो हम लोग यहाँ आके देखा है कि प्रोसीजर का मुताबिक नहीं चल रहा है। Previous commissioners, some of them might not have followed the procedures, and the appellants are in the habit of those judgments only. But the fact is that we cannot simply give a judgment wherein a procedure has been left. So when we are now coming to the proper procedures of the court, some of the appellants they have gone to give press statements also कि अभी का कमीशन मेंबर्स तो अच्छा से नहीं कर रहा है, सब केस को वापस भेज रहा है. It is the procedure. We have to follow it. Now, after spending 30 years in the court, following the court procedures, how can I change it all over just like the day and the night? I cannot turn, no. It has to be followed. So उन लोगों को थोड़ा innocent है, ये लोग मालूम नहीं हो कि वो बोल रहा है. Comparing us with पहले जैसा, पहले कमिश्नर्स लोग ऐसा नहीं था. तो पहले कमिश्नर्स लोग कैसा था, कैसा नहीं था, we don't have to say anything on it. But we as a legal practitioner in our lifetime, the bread and butter has been due to the court, spending in the court. I cannot go beyond the procedures of law. इसलिए अभी हम जितना मेरा कोर्ट में आके आपका जैसा केस में देखता है कि फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी ने हियरिंग नहीं किया, तो हम उसको वापस भेज देता है, बिकॉज ही इज क्वासी जुडिशियल पोस्ट, एफएए जो है, he has to there has to be an order from his court, from his office. Upon that order only you can come to us. Without that order you cannot come to this commission. This is the procedure of law. अभी वो मैं कर सकता हूँ, और एक चीज आपका भलाई के लिए, आपका आसान के लिए कर रहा है, ये कर सकता हूँ. ये पीआईओ आपका सामने ही बोल रहा है that he has all the information that you're seeking and then he can give it to you right here. So I will uh, order the PIO to give you the information right here after the hearing. That is okay, no? So PIO sir, you're okay with that? You can provide the information. Absolutely. Okay, fine then. We do not have reason to hold any. Yes, yes, yes. Sir, I am reiterating the same thing. Yes. Since it was a joint application, Yes, yes. we already I furnished it. And the second application was filed at the time of election. Yes, So we were, as you know, we were Yeah, yeah, totally engaged in election activities. And after we go to know that there is a post notice from commission, and when we got the post notice, Yeah. we immediately inform him that your documents is ready. Sir, you can collect it at any time, but he denied. It's okay. We are ready to Yes. take now also. So आपको ये भी जानना है कि ये जो पीआईओ सर आपको बोल रहा है सही बोल रहा है. आप जब पार्टी में अप्लाई करता है ना, आपका एक पार्टी को उन लोग ने कांटेक्ट करके वर्बली हो या कुछ भी वे में इंफॉर्मेशन को दे दिया, एंड देन दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड, तो आपको दिया समझेगा. जब आप 2, 3, 4 पार्टी में अप्लाई करते हैं ना, आपने इसे किसी एक को दे दिया, तो वो किसी एक ने इसका रिकॉर्ड में, पीआईओ का रिकॉर्ड में हमने इंफॉर्मेशन को सेटिस्फैक्टरीली मिला है करके लिख देने से, that is deemed that you also have got the information because you are a party to that same application, right? समझ रहा है ना? तो अभी उसको मैं पीआईओ के साथ में अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मिल गया, आपको तो ऑलरेडी पहले वाला मिल गया. वो आप नहीं नहीं, आपका पार्टी को तो मिला है ना पहले वाला में, तो इसमें नहीं बोल रहा है. पहले वाला में तो आपका जो दूसरा पार्टी था उनको इन लोगों ने दे दिया है, देन ही हैज इवन सेटिस्फैक्टरीली हमको मिला करके इन लोग का साथ में कम्युनिकेशन कर लिया है, उसमें यू हैव आल्सो गॉट द इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हाट आई से. नाउ हियर इन दिस फ्रेश एप्लीकेशन यू हैव ऑल योर राइट्स टू अप्लाई. बट अभी not making things complicated more, simplifying it the best way, which would be better for you and the PIO and for us also. I order that the information that you want be given to you after the hearing. And upon getting the information, after seeing and going through it, if
you feel that the information that you have asked has been given to you in full, let us know. We'll dispose of the case. So we'll fix a next date of hearing. एक next date of hearing करेगा. उसमें हम लोग आज आपका सामने ओपन कोर्ट में पीआईओ को बोल रहा है, पीआईओ भी एग्री है कि आपको अभी इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो नेक्स्ट टाइम में सर यू डोंट नीड टू कम, विल फिक्स अ नेक्स्ट डेट, यू लेट अस नो, और he will give us a call that the information that he has applied and got from you are in full. Satisfied or not satisfied, that I never look into. That we cannot look into. The only thing is that the information that the applicant or the appellant seeks is always given to him in full. But satisfaction, so you also cannot make anyone, God even cannot make anyone satisfied. So our concern is the full information is given to you. So आप हम लोग को बताइए नेक्स्ट में, आप नए आस्पेक्ट में से भी पीए को बताइए कि आपको इंफॉर्मेशन मिला है सब. तो देन आपका, आप दोनों के एब्सेंस में भी विल डिस्पोज ऑफ द केस. लेकिन आज आपको एक आपका हक देते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि आज इन्होंने आपको सारा इंफॉर्मेशन को देगा, आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, सब ठीक ठाक है तो आप हम लोग को बताइए. Next step में हम लोग will dispose of the case. Not today because we have to see that at least he is getting the information. No, right now तो you are ready with the information. You are going to give it. But how do we know that he has got the full information? Until he comes back. Now अभी आप लेके बाहर पढ़ के भी आज का डेट में भी अभी वापस आके till the court is here. If you let us know, we'll dispose of the case. So but the order will go that order ऐसे जाएगा. The uh, PIO is present and is admitting to the application is received and is ready with the information, will give the information as applied to the appellant. And the appellant, after going through the information provided, intimate the court the receipt of the information in full on or before the next date of hearing. The next date of hearing be fixed on डेट एक बता दें. 27 अगस्त 2024 का पहले आपको कोई हम लोग नोटिस नहीं देगा, आप कहीं में मार्क करके रख दीजिएगा बिकॉज आप इन पर्सन करा है तो इसलिए हम लोग दूसरा कोई आपको नोटिस नहीं भेजेंगे. 27 अगस्त को या उसका पहले हमें आप ये बताइए कि आपको इंफॉर्मेशन जो अप्लाई किया मिला है या नहीं मिला है. अगर आपको मिला है तो 27 अगस्त को आप हम लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा ना, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज का डबल टिक जब निकल जाता है वो प्रिज्यूम मिल गया है उस आदमी को, वो पढ़ो मत पढ़ो. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल कर दिया. वंस यू सेंड समथिंग टू द अदर पर्सन ऑन व्हाट्सएप, if there are two tick marks, that is deemed that the other person has got it. And after getting it, reading it or no, it depends upon that individual. He cannot but pretend or take recourse that आपको नहीं मिला, इसलिए आपको पता है. मैं आपसे क्योंकि वो लोग को सब ऑफिस में जाके मांगने से भी थोड़ा गुंडागर्दी दिखाता है, गाली देने के लिए कोशिश करता है, घेर के देता है. उस दिन भी जब हम साबित करने गए ये लोग घेर के बैठा हुआ है, इनको बुलाया, आप क्यों ऐसा करता है, अपना आदमी आके बहुत सारा वगैरह वगैरह सब बहुत बात करते हैं. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर हम आज अगर वो लोग लेके आया तो हम जिस जिस मांगा आपके सामने में हमको कागज को मैं जो जो मांगा मैं पढ़ के जाऊंगा उसके सर बाय वन आपके ही सामने में हम. नहीं, that we cannot, that we cannot allow you because we have so many other cases. No, आपके लिए ही सिर्फ we cannot spend the whole day. PIOs are here. They have also their own responsibilities. In other words, आपको टाइम दे रहा है एक महीना, जुलाई टू अगस्त को, 27 अगस्त को है तो बीच में तो आपको टाइम मिलेगा. आप पढ़िए, लेट अस नो ऑन 27 अगस्त, उस समय बता दीजिए आपको हम लोग को. तो अभी आपके लिए सारा दिन आप खराब मत पाइएगा प्लीज. ये लोग भी बहुत सारा ऑफिसर्स बैठा हुआ है, असिस्टेंट्स बैठा है. तो Shall I hand it over? yes, In front of you? no, no, no.
Yes, you can do that. It's up to you. So that is an evidence that he has got the information, at least before us. No. So आपको दे दिया है आप which on 27 ना नहीं आया oh 209 श्री एप्लिकेंट वही है पीआईओ कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए लिखा हुआ है सर ये क्या आपका है no पीजी डीआरडीए नहीं आया आप ये भी आपका ही केस है जी सर सर इसमें और इसमें जियो टेक में करता है और नहीं वो हम लोग का लुकआउट नहीं है वो एक क्रिमिनल कोड या स्पेशल कोड करप्शन कोड का लुकआउट है अगर आप कोई कंप्लेन करता है तो हियर इन दिस केस हियर इन दिस कोड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द केसेस वी आर ओनली हियर टू सी दैट यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज ऑल उसमें ये करप्शन है वो ये है मिसमैच है वो वी कैनॉट टॉक ऑन दैट स्पीक ऑन दैट आपको इंफॉर्मेशन दिया नहीं दिया क्यों नहीं दिया वो हमको सुनना है अगर वो इलीगली आपको इंटेंशनली डिनाई किया देन वी कैन डू समथिंग दैट इज आवर पार्ट अपना अपना पार्ट में ही रह के सबना आप समझना है लेकिन आप कोई वकील है क्या नहीं सर ओ नहीं आपका सब अपील तो पूरा एक वकील ही तो वकील ही एक लगाया होगा आपने जी सर जी जी ऐसे लग रहा है तो इसमें आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा है उसको पीआईओ ने अभी तक नहीं दिया है सर ये लोग तो सर हमको पहले एलोंग घुमाया सर हमको तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स के लिए हमको अभी 2 साल हो गए जी हम फिर ये सर इस सुबह भी हम 2 बार हमको वो लोग घुमा रहा है एलोंग दीदी है बोलता है एलोंग जाने देता है एलोंग से फिर लिखावाली में बोलता है इसमें भी सर हमको पूरा चक्कर कटा है जी एक भी सर ये और उससे रिप्लाई नहीं है। आपको मनरेगा में ना सर ये फर्जी सेगमेंट का यूथ एक्सीडेंट जी जी तो ये सर काम क्या हुआ अभी 3 साल हो गया 3 साल में अभी तक पब्लिक को पैसा ही नहीं दिया ओके ओके तो उसमें उसका बाद आपने फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में गया है जी उस फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला है 13 दिसंबर 2023 को तो इसके बावजूद भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आज तो उन्होंने नहीं आया है तो हम लोग आपका वो दिन को ही एक फिक्स करता है तो द पीआईओ एब्सेंट without intimation to the commission, which the commission views very seriously. And with a directive to the PIO, reminding him of his statutory duties attached with the public duties. The commission deems it as contempt of the court wherein a public servant, despite of being served the notice of hearing in an appeal where he is the party and has a statutory duty to answer to it. Therefore, a summon notice be sent
for the next day, and someone as well as a shocker notice is sent him to reply as to why he didn't attend the court hearing despite the notice being served to him. The next day, 2 weeks, intimated, and in the absence of the PIO in the next state of hearing, the appeal would be decided ex parte. The next date of hearing is fixed on 27 अगस्त. 27 अगस्त को का ये केस भी उसी डेट में तुरंत हुआ। इसको हम लोग को आपका पीआईओ को एक सपोज नोटिस भी जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए कि उन्होंने अपना एक ड्यूटी जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेट किया उस ड्यूटी को उन्होंने क्यों नहीं निभाया यहाँ नहीं आते वो हम लोग स्ट्रांगली ऑर्डर। So there's a Yeah. in case of hearing in not declared authority, who should he go? Like go to SE or chief? No, No, in this case, he has to go to the SE because he has already appealed it. Yeah. And then Act also says that it is the SE who is the first appellate authority. The case for latest guideline is the chief who is the Yes, yes. That is confusing us actually, but the state government, I believe, won't be having that power to. Because it is a central no. So it has to come from the commission. SE लो नो लोग लोग हमारा SE में लो था SE लो था ना chief में तो नहीं अभी नहीं कंफ्यूज हो रहा है बॉडी कुछ है अभी आप देख लीजिएगा ऑर्डर हिसाब तो चीफ है जोन का चीफ है एग्जैक्ट ऑर्डर हिसाब हालांकि सार बोल रहे हैं क्योंकि एसी का वहां में जा रहा है तो उनसे नहीं उनसे पहले वहां में जाएगा बस अपना या वी हैव टू बी क्लियर ऑल्सो यस ठीक है सर थैंक यू क्या है ये शालू मेडो versus Japonia Chief Mission Director, Srinagar. it SRLM शालू मेडो भी नहीं है शालू मेडो का नाहरलगुन एक्सवे एक जानागर में हो Miss शालू मेडो my apartment in Hon'Ble. GRC both parties absent. समन कर दिया हाँ दोनों को समन कर दिया without any information. Next date कब होगा 27 को 211 epic number Ralung Yangpo versus DFO सेपा रालुंग यांगपो नहीं है आप है पीआईओ आप डीएफओ है वाका ये पीआईओ है ओके फाइन इससे जो आपका नाम सब बता दीजिएगा पोस्ट डिजिग्नेशन
हाँ जी कॉन्टैक्ट नंबर दिया आपने इसमें एफिलेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है एप्लीकेशन से ऑलरेडी एप्लीकेशन से ये विड्रॉ क्या है यहाँ में कुछ हम लोग को तो नहीं बताया है वो बोला वो विड्रॉ किया है बोल के there has to be a reason उसने उनका जो रजिस्टर रजिस्टर को दिया रजिस्टर आपसे मिला तो आप हम लोग को वो प्रोवाइड करने से we would have disposed of this case today itself तो ऐसा कुछ तो रिकॉर्ड तो नहीं है विदाउट रिकॉर्ड तो we cannot do anything no simply hearsay cannot be treated as evidence so that's why he might not have come आपका बात सही भी हो सकता है इसलिए शायद नहीं आया होगा क्योंकि उसका आया अपना घर में तो कुछ नहीं गाड़ी में आपका कुछ उसका विड्रॉल लेटर या सर नहीं सर नहीं सर विड्रॉ लेते हैं जो रजिस्टर लिया था जी वो वाला कॉपी आपके जो पास है रजिस्टर वो भी व्हाट्सएप में दिया था जी आप प्रिंट किया उसको नहीं सर मेरा मोबाइल ये क्या था एक बार ये ओके ओके वॉट एवर भी आप नेक्स्ट डेट में हम लोग को वो वाला को दिखा दीजिएगा if you are unable to come also send someone by authorizing him to represent you or the PIO on board anyone of your behalf नहीं नहीं या तो शाम तक देने से भी we can do something to dispose of this case but we need evidence no as to the appellant is satisfied or he has got information without anything to we cannot do anything out here no? So better is we fix the next date on or before the next date you give us that letter or paper so that next day on the next date of hearing if you give us that evidence that the appellant has withdrawn or received the information we'll dispose of the case even if you don't turn up you don't come uh, so we'll fix the next date on 27th August उसका पहले आप दीजिएगा नहीं तो आज हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देना जो बात ऐसी बात हुआ था कि ऑलरेडी दे दिया तो नहीं आएगा ऊपर जी तो आपकी तो वही लगे आपको जाने जरूरी नहीं तो हमको लगने फिर एक और ट्राई तो आप किसी करें जी वो तो फिर गलत हो जाएगा ना we need evidence the proof for whatever you say no ऐसे इसलिए हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिएगा ये ऑफिस में जाके ना ऐसा एक छोटा रिक्वेस्ट था ना जी रिक्वेस्ट मतलब हमारे पास एपीएल हमारा नीचे बंद थी और जी तो रिसेंटली में एक डीसी ऑफिस में आए जी डीसी में से आके तो वहाँ से हमारा डीसी में हमारे पास एपीएल जी तो उसको चैलेंजिंग के लिए हमारा तो उसको नेक्स्ट डेट में हम लोग रेक्टिफिकेशन कर देंगे एंड देन इवन वी कैन इवन कंडोन द डेट्स बट यहाँ पे we are not we are confused now the state government has brought out some memo but then the act says something else but we have to go by the act only it's like a central government of India act उसमें नेक्स्ट डेट में देखते हैं उसको 174 नवम DFO लिखावली versus Nabam Tai. First hearing na. Second. Second. Board parties action without intention to the mission. Ah. 169. Okay. EE party. तो हम लोग यहाँ से भेजा है इसमें आपको क्या कहना जैसे PIO सर एक PIO सर उसका भाई बीमार हो गया दिल्ली के आप कुछ आप APIO है तो आप कौन है सर हम वहाँ का डिपार्टमेंट का सर्वेयर तो आपका कुछ लेटर होना पड़ेगा
The PIO has to authorize you to represent him, or at least the APIO has to authorize a letter to represent them here in this. लेकिन आपको कुछ समझाया है इस केस का क्या बोलना है आपको? जो एप्लीकेंट है जी एप्लीकेंट को सर हम लोग डिपार्टमेंट जो कॉन्टेक्ट किया जी तो उसको बताया था कि इंफॉर्मेशन सब रेडी है हाँ पर भी वो लेने नहीं आया और रिपोर्ट कर तो लेने नहीं आया सर वही है ऐसे बहुत बहुत केसेस है यहाँ पे applicants they apply the information when the PIO is ready with the informations and asking them to pay the fees they don't turn up ऐसा बहुत सारा केसेस हो रहा है बट बदकिस्मती ये है कि आरटीआई एक्ट में ऐसा वाला एप्लीकेंट्स के लिए कुछ भी पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है बट पीआईओ को पेनलाइज करता है तो एक्चुअली जो जो ऐसा आरटीआई करके पीआईओ गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करके इंफॉर्मेशन रेडी कर देता है वो पैसा तो लॉस में चला गया ना तो एक्ट भी ये बोलता है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज शुड नॉट बी मिसयूज and then made to just simply be wasted in printing or publishing information. But again, those applicants or appellants, they don't turn up. इसका कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा अभी तक सर फोन भी जल्दी लगता नहीं है बहुत ढूंढना जी जी इसलिए he's saying the PIO's representative is saying they are ready with information. So the कॉन्टेक्ट भी किया था लेकिन लेने नहीं आया over phone we recorded also. The appellant has been contacted over phone also, intimated to collect the information by paying the requisite fees. But the appellant has not turned up till now to pay the fees and receive the information, which is bad on the part of the appellant. And he has to know that the act clearly states that government resources should not be made to be wasted. In the process of compiling and reading the information by scanning, by photocopying, lots of paper which is which does not come for free to the department or the PIO's office is utilized in the belief that the appellant will be hearing the fees for the information. But in so many cases, such cases, after letting the office the VIO incur expenses, provide the information to the appellants, the appellants don't turn up to collect the information. In 4 regions best known to them, whereby the, the time and resources of the PIU and his office is simply wasted for no fault of the PIO's office, but in the unnecessary depth seeking of information
by the respective applicants. So next date be fixed. This 27th August. 27th August को एक बार आ जाइएगा आप उस समय, लेकिन एक अथॉरिटी लेटर लेके आइए पीआईओ से, पीआईओ को या एपीआईओ को या आपको कोई भी आएगा तो दोनों में से एक पीआईओ और एपीआईओ आने से यू डोंट नीड द लेटर, बट कोई दूसरा आपको या किसी को भी भेजने से एटलीस्ट कम विद ए लेटर नो टू प्रूव दैट यू आर हिज रिप्रेजेंटेटिव। आज हाँ आपका नाम और डिजिग्नेशन सर्वे लोरिका ऑफिस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूटी राधा क्या लास्ट टाइम भी आया था बोले होगा हाँ वो हम लोग इसको will dispose of the case with an order to the appellant to collect the information from the PIO's office by paying the requisite fees. As this is the third hearing, yes, second hearing, he was he is absent for the second time, and in both occasions of hearing, the PIO has intimated that commission also that the information is so already with them. And they have even contacted the appellant to collect the information. But till today, the appellant has not done it. And the commission also feels that despite repeated notice issued to the appellant, he is not turning up for the meeting. So we are made to believe that the appellant is no more interested in his appeal. And so the appeal is disposed of with an order to the appellant to collect the information from the PIO office by paying the requisite fees. ठीक है, हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दिया एक ऑर्डर के साथ कि एपिलेंट ने आपके ऑफिस से जो फीस बनता है उस इंफॉर्मेशन का वो पेमेंट करके ले ले, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम में भी नहीं आया, आपका यहाँ से आया है, सेकेंड टाइम में भी वो नहीं आ रहे हैं, आप बोल रहे कि उनको आपने फोन पे भी कांटेक्ट किया है कलेक्ट करने के लिए, स्टिल ही इज नॉट टर्निंग अप, मींस वी deem the appeal fit to be disposed of with the belief that he is not at all interested in his appeal. Thank you, sir. आपका नाम और डेजिग्नेशन और नंबर भी दे दीजिए ये दोनों और भी काम ये लोग हम लोग स्टाफ है ओ आई डोंट नो क्यों बिठा दो हाँ